یکی پیراهنی کن نمتن داشت اگر پیدا کنم زیبا گلم را با آب دیدگان می شویم او را گل گم کردم می جویم او را به هر گل می رسم می بویم او را گل گم کردم می جویم او را به هر گل می رسم می جویم او را سینه سوزان مرا تو نمک میزنی سینه سوزان مرا تو نمک میزنی همه مظلوم مرا تو کتک میزنی امم را مزن امم را مزن همم را مزن حبوب جان من وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا جسم شریف شهدا به زمین مانده جسم شریف شهدا به زمین مانده بر بدن بی سرشان اسب ها راندند بر بدن بی سرشان اسب ها راندند آن بدن های پاک آن بدن های پاک آن بدن های پاک شده قلدان بخار وا حسینا وا حسینا وا حسینا ای تن پاکت به زمین به سر نیسره ای تن پاکت به زمین به سر نیسره ظلمت شب چون رسد چه کنه دختره ظلمت شب چون رسد چه کنه دختره من در این قتلگاه من در این قتلگاه من در این قتلگاه به کیارم پناه وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا برک و تک خوردن ما غم بهانه بود برک و تک خوردن ما غم بهانه بود چون که برم نام حسین تازیانه بود چون که برم نام حسین تازیانه بود من خونی جگر من خونی جگر من خونی جگر میروم در سفر وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا وا حسینا صلوات Jazakallah, brothers, wonderful. May Allah accept your Zadari, inshallah. As you all know, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil far. The one circle matam, now we're starting another circle matam. We need this space to accommodate this circle matam. I'd like to invite Brother Onali to come and start the matam. Bar Muhammad wa ali Muhammad sallallahu.
वै हुसैन मान नूरे दो ऐने मान वै हुसैन मान नूरे दो ऐने मान वै हुसैन मान नूरे दो ऐने मान वै गरीब इमाम वै शहीद इमाम वै हुसैन वै हुसैन मान नूरे दो ऐने मान वै गरीब इमाम वै शहीद इमाम वै हुसैन मान नूरे दो ऐने मान वै हुसैन मान वै शहीद इमाम वै गरीब इमाम वै शहीद इमाम वै हुसैन मान नूरे दो ऐने मान करो मातम इमाम का महशर हुआ ख़ैमा लुटा महशर हुआ ख़ैमा लुटा करो मातम इमाम का कैदी बना ज़ैनुल इबाद कैदी बना ज़ैनुल इबाद करो मातम इमाम का महशर हुआ ख़ैमा लुटा महशर हुआ ख़ैमा लुटा करो मातम इमाम का कैदी बना ज़ैनुल इबाद कैदी बना ज़ैनुल इबाद करो मातम इमाम का बिन्ते अली को कैदी बनाकर शाम से कूफी लेकर गए शाम से कूफी लेकर चले छीनी गई सर से रिदा छीनी गई सर से रिदा करो मातम इमाम का
जा तेरा भला होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। बाबा मेरा कूफे में मेहमान हुआ होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। बाबा मेरा कूफे में मेहमान हुआ होगा। कासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी ये है। कासिद मेरे बाबा की पहचान बड़ी ये है। पेशानी पे बाबा की सजदे का निशान होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरे बाबा की एक खास निशानी है। कासिद मेरे बाबा की एक खास निशानी है। अब्बास आलम पकड़े नजदीक खड़ा होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। मासूम सकीना की पहचान ये है कासिद। मासूम सकीना की पहचान ये है कासिद। सर उसका शहीदी के जानों पे धरा होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा। कासिद मेरा खत ले जा, जा तेरा भला होगा।
था ये हिरन में गाजी का नौहा, था ये हिरन में गाजी का नौहा, बेदस्त होकर गिरता हूँ मौला, बेदस्त होकर गिरता हूँ मौला, ये दर्द मुझको मरने ना देगा, ये दर्द मुझको मरने ना देगा, तकती है रस्ता बाली सकीना, आओ मदद को ए इब्ने ज़ैदर, अस्सलामुन अलैक या गरीब हुसैना, 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 था ये हिरन में गाजी का नौहा, बेदस्त होकर गिरता हूँ मौला, ये दर्द मुझको मरने ना देगा, ये दर्द मुझको मरने ना देगा, तकती है रस्ता बाली सकीना, तकती है रस्ता बाली सकीना, आओ मदद को ए इब्ने हैदर, अस्सलामुन अलैक या गरीब हुसैना, 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 सही सही Saint, 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 Saint. हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, 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 हलचल फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, तीरों पे तीर नेज़ों पर नेज़े चलाते हैं, तीरों पे तीर नेज़ों पर नेज़े चलाते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं, हलचल तीरों पे तीर नेज़ों पर नेज़े चलाते हैं, तीरों पे तीर नेज़ों पर नेज़े चलाते हैं,
हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते हैं। हलचल है फौजे शाम में क्या वक्त पड़ गया है मोहम्मद की आल पर। क्या वक्त पड़ गया है मोहम्मद की आल पर। चादर नहीं है चादर नहीं है बालों से मुंह को छुपाते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते 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 हैं। तीरों पे तीर नेज़ों पर नेज़े चलाते हैं। तीरों पे तीर नेज़ों पे नेज़े चलाते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास आते 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 हैं। असगर को माँ छुपाती है छुप छुप के गोद में। असगर को माँ छुपाती है झुक झुक के गोद में। खैमों को तो खैमों को तोड़ तोड़ के जब तीर आते हैं। हलचल है फौजे शाम में अब्बास 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 आते हैं। हलचल फौजे शाम में अब्बास आते हैं। ज़ैनबे हज़ीने मन ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनबे हज़ीने मन ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनबे हज़ीने मन ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनबे हज़ीने मन ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनबे मन ज़ैनबे हज़ीने मन ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। मन के भी अलमदारम बे मोइनो बे यारा। मन के भी अलमदारम बे मोइनो बे यारा। अज़ हयात बेज़ारा अज़ हयात बेज़ारा ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनबे ख्वाहरा खुदा हाफ़िज़। ज़ैनबे हज़ीने मन ज़ैनबे हज़ीने है मेरी बहन ज़ैनब घर तेरे हवाले है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब सर तेरे हवाले है। जो लाए के
सजदा है, सर उसके हवाले है। जो लायक सजदा है, सर उसके हवाले है। बस चलने को है खंजर, बस चलने को है खंजर। खाहरा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। खाहरा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, खाहरा ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। खाहरा खुदा खंजर मेरी गर्दन पर जब शिम्र चलाएगा, खंजर मेरी गर्दन पर जब शिम्र चलाएगा। रह रह के मुझे तेरा चेहरा नजर आएगा, रह रह के मुझे तेरा चेहरा नजर आएगा। तू होगी बरहन असर, तू होगी बरहन असर। ख्वारा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। ख्वारा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। ख्वारा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। ख्वारा खुदा हाफिज़ खंजर मेरी गर्दन पर जब शिम्र चलाएगा, खंजर मेरी गर्दन पर जब शिम्र चलाएगा। रह रह के मुझे तेरा चेहरा नजर आएगा, रह तेरा चेहरा नजर आएगा। तू होगी बरहन असर, तू होगी बरहन असर। खाहरा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। खाहरा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे हसीने मन। खाहरा खुदा हाफिज़ मन के भी अलमदार बे मोइनो बे यारा, मन के भी अलमदारम बे मोइनो बे यारा। अज हयात बेजारा, अज हयात बेजारा। खाहरा खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन, ज़ैनबे खुदा हाफिज़ ज़ैनबे हसीने मन। खाहरा खुदा हाफिज़। सही सही Sein ya sein hada, sein ya 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 sein ya sein, 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 sein ya sein ya sein. Allahumma salli ala Muhammad wa थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा उसमें जो आसान उसको समझा ना जो बोलता है। और वो जो अस्सलाम उनाले वाला है ना वो मुझे भेजना, ये उसका लिखा हुआ है ना अपना। ये वाला जो बल्ती कराची में करते थे जंजीर का मातम, मैं उसी पे करता रहा हूँ।
Brothers, if you settle down, inshallah, we're going to start our English program with the Quran and Ziyarat Ashura. So please settle down. Inshallah, we're going to start our English program. Per Muhammad wa ali Muhammad salawat. I'm reciting Noha. You're reciting Naha. Who's reciting poetry? I don't know. Do you know the name? Reciting poetry? I'm not reading poetry. I'm reading Mersia. Do you know the name? What you reading? I'm reading Mersia. That's a poetry. Give the name to Muhammad. No, we're doing Noha. Yeah, we're reading together. Who else? I'm reading Noha. He's reading. I'm reading. And there's one more kid, he went to go get his mom. So you all going to read the Naha? Yeah, all. Nobody's No, I can do Ziyarat if you want. with that later on, no? I know, but still, I'll do it. Start Muhammad. MOMIN and MOMINat, we are going to start with the English program. And to start the program, we're going to start with the recitation of the Holy Quran. And for that, I would like to invite Brother Fahim to recite the Holy Quran. Please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Brother Fahim. Loud salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم
تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله عن سبيل الله بغير علم ويتخذها عروة أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا وليا مستكبرا كان لم يسمع كأن في أذنيه وفرا وبشير بعذاب عليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا صلوات Thank you, Brother Fahim, for that beautiful recitation of the Holy Quran. Please recite another loud salawat for the brother. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mu'mineen, I would like to request that during the program, Mu'mineen, Mu'minat, that if we can observe silence, just so the reciters are able to go ahead and put out their best efforts without any distractions. To continue on with our program, we would like to continue with Ziyarat Ashura, and for that I would like to invite Brother Ahmed to come and recite Ziyarat Ashura. Please welcome him with a loud salawat.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. على بيت محمد صلوات. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام. Sisters, it's Yawm Ashura still. And what has been recited is Ziyarat Ashura. So we humbly request, please maintain silence. Please keep all the kids under control. And all the kids are also kindly requested to please maintain silence. Pin drop silence is required in this main hall when Ziyarat Ashura is going on. Jazakallah. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا خيرة الله وابن خيرة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة السيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صارح والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت عظمة المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السلام. وجلت عظمة مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برعت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاتبة. ولعن الله ابن مرجان. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت والجمات وتنقبت لقتالك بأبي أنت وأمي. لقد
فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني تلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني إنك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحار وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمي وجوري عليكم وعلى أشيائكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاتك وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحار وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلمان لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأل الله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تلب ثاره مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يؤتيني بمصابيبكم أفضل ما يعطي مصابا مصيبة ما عظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تنال منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن عاكل العكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد عليهم منك اللعنة عبد العابدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منكم
اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاحدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله العهد مني لزيارتكم. Together. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Again. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وعبد به أولا ثم اللعن الثانية والثالثة والرابعة. اللهم لعن يزيد خامسة ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وعال أبي سفيان وعال زياد وعال مروان إلى يوم القيامة. سجدة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم رزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبتني قدم صدق إنك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم لعنهم جميعا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وعلى محمد بالأنتار صلوات. Thank you, brother, for that beautiful recitation of Ziyarat Ashura. Please give him another loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Next, I would like to invite our young brothers, Brother Alizar, Ali Hani, and Qaim, to come and recite poetry in the form of a Mersia. Please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Hussein, 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 Hussein. The earth trembles.
told to me, to him I'm so dear. My father then told me, to him I'm so dear. The time has now come for us to part. The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies blackened. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. After you were slain, they came into our tent. They slapped me on my face and snatched my earrings. Do they not know we are of Ahlul Bayt? Do they not know we are of Ahlul Bayt? Oh grandfather, where are you? The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies blackened. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. Sakina cannot sleep, her father has been slain. Oh father, where are you? Sakina cannot sleep, her father has been slain. Oh father, where are you? I want to lay my head upon your chest. I want to lay my head upon your chest. When will I see you? When will I see you? The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies blackened. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. When I fell down from the camel's back, Zainab cried out, no one took heed. When I fell down from the camel's back, Zainab cried out, no one took heed. But then father, your head fell off, holy sphere. But then father, your head fell off, holy sphere. When will I see you? When will I see you? The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies blackened. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. The city of Sham came out to see who are these prisoners paraded through town. The city of Sham came out to see who are these prisoners paraded through town. Can it really be the family of Rasul? Can it really be the family of Rasul? Without any veil, the daughter of Hussein. The earth trembles, the skies blacken. The earth trembles, the skies blacken. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. My brother Eliasgar, he died without a drop. Now how can I drink whilst he's thirsty? I want to leave this evil dungeon of Yazid. I want to leave this evil dungeon of Yazid. When will I see you? When will I see you? The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies blackened. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. O men of Yazid, please take away this tray. I am not hungry, I want my father. O men of Yazid, please take away this tray. I am not hungry, I want my father. On the tray they lay my father's head. On the tray they lay my father's head. I want to be with you, the time has now come. The earth trembled, the skies blackened. The earth trembled, the skies blackened. Hussein has been martyred, Hussein has been martyred. Thank you, our little brothers, Brother Ali Zar, Ali Hani, and Qaim. Please, for their encouragement, please provide them another loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. To continue with tonight's program, I'd like to invite Mulana Mirza Abbas to come address the MOMIN. Please welcome him with a loud salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraj. Mu'mineen, I'd like to request everyone that if everyone can move forward towards the member
بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أوله بلا أول كان قبله وآخره بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وأجزت عن نعته أوهام الواصفين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وطبيب نفوسنا أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد عظم الله أجورنا وأجوركم والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. Usually the majlis that we have on the eve of Ashura is a majlis where we recite only Masaib. On the day of Ashura we only recite Masaib. Whether that be in the afternoon, as you may have noticed in Farsi or in Urdu as well, there was only Masaib recited. However, as we look at the time and we still got a bit more of a time, I would like to reflect a bit about the whole tragedy of Karbala and also a bit about where this tragedy should really lead us to, so that we can take a lesson from these 10 nights of majalises, our participations or azadaris. And then we will obviously spend a bit more time for the Masaib of Sham-e-Gharibaan, the eve of the Ahl Bayt alayhi salam who suffered the most. Now, for anything to become universal, first and foremost, something to become universal itself, it should have certain peculiar principle within that for it to become universal, where everybody accepts it. For example, you may say that, oppression, or you may say that child marriages are wrong. Child marriages are wrong. Honor killing is wrong, right? Well, regardless of a person being Muslim or non-Muslim, right? Regardless of the person being from East or West, the person will accept that because this is a universal fact, right? That the child marriages is wrong is a universal fact. Everybody will accept. What Hitler have done is a universal fact. It's oppression. It's wrong what he has done. Regardless of a person being a Jew or a Muslim, or even a non-believer, he will accept that. So for something to become universal, it requires a lot of effort, and there should be certain universal principles that is accepted by everybody. That everybody come on board for this reality, for this truth, if you want to call, for this principle, right? Everybody will agree on it. Now when we look at Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Sisters, we are again kindly requesting you to please maintain silence when the majlis is on. Please maintain complete silence when zikr Ahl Bayt is going on from the member. Jazakallah. Salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Now when we look at the incident of Karbala, the epic of Karbala, we find that it has universal elements in it, meaning that it has trespassed, it has transcended all of the different caste, creed, nations, locations, and it has become a universal truth. Only today, as we find, for example, there is Afghani brothers, there is Pakistani brothers, Indian brothers, Arab brothers. They are all under this roof, and they are all commemorating an incident, an event that took place 1,400 years ago, right? Now, the other thing about the universal reality and truth is something that is perpetual, that is always there, right? So it's, a principle that always existed, and it's not affected by, the environment. One may say that, well,
For example, child marriages at a given time was okay, for instance. But now it's not, with the human rights, so on and so forth, by the intellect reaching to a certain capacity of understanding, we decided to change that. And it becomes a truth, it becomes a principle of humanity. So something that has an incident, an event that took place 1,400 years ago, and still it subsists, it's perpetual, it's still existing, and it's still something that is alive, right? This points out to the universality of this incident. Many incidents have taken place in history, but it hasn't been commemorated. It hasn't been a source of inspiration, right? So now this event of Karbala becomes that source of inspiration and something that has remained for 1,400 years. Any incident could be commemorated or remembered for a period of span, for a period of time, but not for 1,400 years. Even that, even if we emphasize a lot on it, if we remind it over and over again and we try to propagate about that event or incident, still that will remain for just a period of time. It will not live for 1,400 years. And that even in this fashion, the way it is, with that passion, with that love that it contains within it, with that lessons that are in there for different creeds of people, different tribes, for different nations, for different ages, right? Once again, that points out to that universality, right? So universality is very, very unique and special. And especially in today's world, what is of value is universality. Internet, gadgets, if you look at it, the universality that it contains, the shallow universality, the pseudo universality that it contains within it, that everybody can use it. That's why, everybody adapts to it, uses it, and are attached to it and would like to have that, right? That's the universality, right? So this event of Karbala is when we apply all of these principles of universality to it, we find that it is a universal event. That a child, an older person, people who lived 500 years ago, people who are living today, people belonging to different backgrounds, people who are Muslims, non-Muslims, people who even does not believe in Islam or God as well, would find that there is something very powerful about this event, about Karbala. Right? So when it becomes universal, this means that it is there to remain. And as it is there to remain, what it requires of us is to join this so that we also remain. Right? So our baqa, our subsistence is because of us joining with this universality, with this event of Karbala. Eventually one would find, that's why these poets always say that, a day will come that every nation will say that Hussein is ours. And it's going in that direction. Right? Now, we are not looking at why it becomes that. Obviously, that sincerity of Imam Hussein, the sincerity of Shuhada Islam, that is there. Yes. On top of all of that is that the universality that the message contains within itself, and that is the Quran. Because Quran is a universal book. Quran is an eternal book. So Imam Hussein and the companions of Imam Hussein alayhi salam kept the Quran as the criteria. It is the saving of the Quran. Their lifestyle is from the Quran. They are natiq of the Quran. They are the speakers of the Quran. Their actions are in accordance to the Quran. As the Quran is universal and is eternal, then someone whose action is exactly according to the Quran and for the sake of Quran also becomes universal and remains for eternity. For example, the story of Yusuf alayhi salam and the brothers. The story of Yusuf and Zulaykha, that happened a long time ago. However, the sincerity of Yusuf,
the sincerity of Yaqub, and that story remained till eternity because it's in the Quran. Because this story have attached itself to the Quran and has become universal. So now, as this whole epic of Karbala was for, as he himself says that, my qiyam is for reforming the ummah of my Jad, the nation of my grandfather, and to revive the sunnah of my grandfather, in order that I do amar bil maruf wa nahy anil munkar, which are the principles of the Quran. That's the purpose of my qiyam. That's why I'm doing this qiyam for. Now, as this Karbala becomes universal, and we see that it is becoming universal as well, and it contains all of these principles, because the title of Karbala is that universal message which is of the Quran. Now the point becomes that the same way as people have deserted the Quran, forsaken the Quran, that's why Karbala happened, right? They have forgotten the Quran, they have forsaken the Quran, and Imam Hussein want to revive that. Revive that Quran, revive that Amar bil Maruf wa Nahy anil Munkar, right? So we see Karbala happening, right? So as they have forsaken the Quran, we have seen their destiny, what happened to them, how they are remembered today. Now for us is that we should not forsake the truth of Karbala, the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam. We have to hold on steadfast to those principles. We have to hold on to those principles which were there in Karbala, right? Yes, now when I say they have forsaken the Quran, well, actually they did not, to be honest, because those who killed Imam Hussein, they were Hafiz of the Quran too, right? They were reciting Quran, they fasted, they celebrated, هَذَا يَوْمٌ تَبَرَّكَتْ بِهِ بَنُو أُمَيَّةَ, isn't it? They did all of that. So, forsaking the Quran means that leaving the spirit of the Quran, leaving that ruh, leaving that truth that exists within the Quran. That's what Prophet says in the Quran, that on the day of judgment he will complain to Allah, Ya Rab, hada qawm, this nation have made the Quran mahjur, have forsaken it. Mahjur means they have forsaken it. So those who killed Imam Hussein alayhi salam, they were Muslims. They were reciting Quran. They were praying namaz. They were doing salat and fasting and everything. But they still killed Imam Hussein. This means that they have forsaken the spirit of the Quran. Now the same applies for us as well. First and foremost is the Quran, then the value of Quran that we should understand. That on that very last night, what did he say? لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا. Perhaps we, Abbas, go and ask them to give us a night. So that in this night, on the 9th night, last night, Hussein is saying, maybe la'allana, look at the humility and humbleness of the grandson of the Prophet. That perhaps we pray tonight. Perhaps we recite the Quran tonight. We do dua tonight. We do astaghfar tonight. Maybe. And you know how much I love these realities, these recitation, these communications with Allah subhanahu wa ta'ala, recitation of Quran and all that. How much I love the prayers, right? So Imam Hussein on that night asked for one night to perform salat, to recite Quran, to do dua, to do astaghfar. So how we should be, right? Even if there were no reports of or any narratives from the Masumin, and this hadith of Imam was there, is sufficient enough to judge and to decide where is the haqq and where is the batil. So we as lovers of Imam Hussein, we who want to be in the Safina, in the ark of Imam Hussein alayhi salam, must be at the forefront for our prayers, must be at the forefront for the recitation of the Quran, for doing astaghfar, for doing du'as, right? Now,
as the Quran was forsaken by the Muslims, which led to killing of Imam Hussein alayhi salam. Now, we should be careful that we should not forsake the reality and truth of Karbala. It's a universal truth, the same way as the Quran is universal. And we have seen all of the communities, how they are commemorating and being together in this event of Karbala and participating in it. So the message of Karbala is also universal. And that's what we've been trying to point out to in regards to that Tawheed ilmi, the Tawheed which is theoretical Tawheed, intellectual Tawheed, that oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And Tawheed amali, which is Tawheed in action, which we have seen in the actions of Imam Hussein alayhi salam, in the ashab of Imam Hussein alayhi salam. That's what is needed. The message of this sacrifice is that Tawheed. Now obviously in order for us to reach that, you have that salat, you have that, fasting and praying and du'as and all that, and reflecting on that. Not just the outward form of it, not just the azadari's outward form of it, but the true reality, what it is there in the azadari. Right? That's what we should be, looking for and expecting, that in this 10 days, a reflection of how many things that I have learned, how many things that I have decided to change while I was sitting in the Majlis of Imam Hussein. I said, no, I'm going to change this. And I'm going to, for example, act on these things, right? So it's a reflection is needed for these majalises. If there is no change, if there is no reflection, and if I am going the way I was before these 10 days, then these azadaris have not really done its dues. And my azadaris also wasn't done in the true, sincere sense, but rather it was just a practice. It was just like that we all do, we all gather, we socialize, we've been doing for years, and we have done it. And then this just becomes a face and a form. And then when it becomes a face and a form, na'udhu billah, this itself becomes the reason of and hurdle for the 12th Imam to return. Right? So we got to be very, very careful. And when we look at, for example, the Masa'ib as well, within the Masa'ib as well, we find that the story of Karbala is very mysterious. It's very unique. Witr al-Mawtur, as Imam Hussein is Witr al-Mawtur, the story of Karbala is Witr al-Mawtur. That's why the head of Imam Hussein was reciting, Am hasibta al-ashab al-kahf wal-raqim. Do you think that the story of Ashab al-Kahf is strange? He recites that verse number 9 of Surah Kahf, but the story of mine is much more stranger than the story of Ashab al-Kahf. Right? So the story of Imam Hussein alayhi salam, apart from having that principles that governs the earth, it also contains within it principles that governs the physical reality. It also contains within it those principles that governs in the metaphysical reality, in the malakut. That's why we said, we were talking about how this is painful for the heaven and earth, right? And the heaven cries, and the things that happen. There are narrations from Ahl Sunnah and Ahl Tashi. After the killing of Imam Hussein alayhi salam, eclipse took place. There was a sandstorm. There was an earthquake. The stones started to cry blood. Wherever you lift a stone, there was blood, fresh blood under that. Right?
And these are reports from Ahl Sunnah and Shi'i. So these are the metaphysical realities that manifest in the physical realm. But there's something much deeper than that you find in the story of Karbala. Like, for example, usually, these narratives are used in pointing out to the Masai part, to the sad part, and we cry on it. But there's something much deeper than that we need to reflect upon, that we need to understand. When we understand that, then we will know the true reality, the true spiritual reality, metaphysical reality of Ahlul Bayt alayhimus salam. We have the narration that when Siddiqa Kubra was shrouded, and the children, Amirul Mu'minin asked the children to part farewell to the mother. She was shrouded. The kafan was tied as well. But Imam Hussein alayhi salam wasn't coming. He was standing at the door. And he says, till my mom calls me, I'm not going to go. And Ali says, Wallah, the kafan knots open, and the mother said, Hussein, come to me. Right? These are the metaphysical realities which we tend to reflect in a Masai side of it. But this is true. And then what did Hussein said to the mother? Hussein said, Mother, you call me now, and I'm going to call you on the day of Ashura. You should come for me. There are reports which says that on the 28th of Safar, when Hussein leaves Medina, mother joins Hussein from Medina. And she was there till Ashura. Wasn't that the night where Imam Hussein was in the plains of Karbala and said, do you hear the cry? Do you hear the sound of this lady who's crying at night? He said, yes, I wanted to ask you who this was. Hussein, this is my mother who have arrived, and she's in Karbala. I mean, the famous poetry line of Mir Anis, which also is reflected in certain narratives, which says that with one dagger, I'm going to slaughter the head of sister and the brother. That's what Hussein said. And Mir Anis brought this in his poetry, in his Mersia. With one dagger, I'm going to slaughter the head of the sister and the brother. Right? So Shimr thought it is Zainab who is here. But what was the voice that echoed? Oh Shimr, you're blind. This is not Zainab, but this is Zahra. Okay. Now, the manifestation of these realities becomes possible for those individuals who is extremely in the dark, in the zulumat, such as Shimr. And also it becomes possible for those individuals who are extremely at the height of light, nur. That's why Jawad Amali, he says that the recitation of the Quran from the head of Imam Hussein alayhi salam was not heard by everybody. I mean, if that was the case, there would be a whole uproar and revolution. So the recitation of the Quran from the head of Imam Hussein, obviously it's a miracle. It's a metaphysical reality and truth. Was not heard by everybody. But the 3-year-old daughter, you want to call Sakina or Ruqayya, she could hear that. Because she had that marifat, that deeper understanding of that spirituality. That's the reason why Hussein was very much attached to Sakina. The relationship of Hussein and Sakina was like the relationship of the Prophet and Fatima. So those who are in the extreme level of nur and light, they could see that. That's why you have that priest in Halab in Syria, he saw that. That's why you have the wife of Khuli, because the head of Hussein was taken right away to Kufa, right after. Because Khuli takes the head of Hussein right away because he wanted to celebrate and inform Ibn Ziyad in Kufa. So he takes the head today, right after severing the head, right? After all that incident of galloping the horses, which we'll talk about in a little bit, right? So he takes the head right away, and
He goes to the castle, it was locked. He reached late. So he said, tomorrow morning I will go. So he takes the head to his house, the head of Hussein, and he tells to his wife that I have brought a very, a treasure, that our days will change. We are so lucky. And she inquires, what is it? He says, it's the head of Hussein. And the wife says, may the curse of God be on you. I'm not going to be in this house under this roof with you together. And she comes out of the room, and he has placed this head in one of the cabinets in the kitchen, in a tray. He says, the wife of Khuli says that I saw angels and lights as descending from the heaven on this head. She saw that because she has that third eye, that marifat, that heart, that purity to see it. So this purity was shown. Same applies for Yazid, as he heard the head of Imam Hussein reciting Quran because he was at that level. Now Shimr, when he's saying that I'm going to slaughter the sister and brother together, he's seeing it. There's somebody there trying to kill Hussein. But he couldn't really figure out what's going on. That's why it's saying that La yawmuka yawmuka Abu Abdullah. There's no day like the day of Abu Abdullah. It was full of miracles. It was something beyond one would comprehend and understand what was going on at that hour. Particularly at the hour when Imam Hussein was being killed. Right? So here Shimr saw. Then that voice echoed. Right? Now Bibi Fatima was there with Imam Hussein till Ashura. And then you have that report on Sham-e-Gharibaan which we recite. That Zainab was guarding the tents. And then she sees that a man approaching the tents. And she says, oh Arabs, stay right there. Don't go any further. Then this Arab who was on the steed, he removes the mask. He removes the veil. And then she says, oh father, you have arrived now? It is Ali who came. Mother left, the father came. And that's why Zainab was like that in the whole, captivity from Karbala to Kufa, Kufa to Sham. Look at the sermons of Zainab. That father is there. That support is there. That strength is there. Right? So we discuss these things from a very masaibi, fantasy or storytelling point of view. But this is not storytelling or a fantasy. But these are truth and reality that happens and it takes place. And it has happened in history. It's been recorded. But the point is that having that vision and that marifat, that third eye, the eye of the heart to see these things, right? As we have, you may hear from now onwards on every weekend in regards to the whole, how the heads of Shuhada and what happened with it and how the, writings on the wall appeared all of a sudden. That there be curse on these people who are taking this head, so on and so forth. They got scared, these people who are there, right? So there's this mysterious side to the story of Imam Hussein alayhi salam. That mysterious metaphysical side also can easily understood from a philosophical and irfani and mystical point of view, right? Because this event is La yawmuka yawmuka Abu Abdullah. That's why it becomes, I haven't seen nothing but beauty in the plain of Karbala. That's what she says, right? Ma ra'aytu illa jamila. I saw nothing but beauty. And even, let me just add this and we'll go for Masaib. And even if you analyze the sermons and analyze the verses which Hazrat Zainab and the fourth Imam is using in order as a counter argument to the enemies, like Ibn Ziyad in Kufa belittles Imam Sajjad, disrespects Imam Sajjad. And he says how victorious we were and how we killed you guys. In return, Imam Sajjad
recites a verse in the Quran which says Allah is the one who takes the ruh when a person dies. There are other verses which he could have mentioned, like the angels takes the verse, or the angel take the work. There's plural and also singular as well. But there's a verse which he said Allah takes the verse. Allah takes the ruh, spirit, when a person dies. And that's why you have the saying that when Hussein was dying, the angels came to take the spirit. But when they saw Hussein in this pain and wounded so much, they said, we can't do this. It is Allah who came from the Arsh to take the ruh of Hussein. Right? So we have to look deeper behind the statements of Masumin alayhi salam to understand that. Why he used this verse? What's the reason? Right? On what level Imam Sajjad is? Witnessing that the heaven and the earth is meeting. That's why there's no day like the Abu Abdullah al-Hussein alayhi salam. Right? And why she's saying, I saw nothing but beauty in the plain of Karbala. It was all crystal clear. She was on that level that she could see the reality, the divine truth in all forms that it exists. That's why you have, when in Kufa, she wanted to give a speech, there was so much noise in Kufa. In one of the khutbahs it was mentioned that there were children, there were people laughing, clapping, making noise, and she wants to deliver a sermon. And then she says, stop. Hazrat Zainab, just before starting. And it's been mentioned that even the bell that is in the necks of the camel, they stopped. With one indication of Zainab. She's on that level. So all of these, for example, this may be used as a Masaib part. Zainab ne is tarah se kaha, she said it, everybody was. But there's something much deeper to that than just Masaib. That's something that is needed, a deeper research of Maqtal, of these narrations, and explanation of these on a deeper level, what they are and why they've been mentioned in this fashion. Right? That is what is required. And at the same time, what is required is not just the deeper explanation of these narratives, but even the ziyarat that we have. Ziyarat Ashura and another ziyarat, and the rewards of these ziyarat that they are. Mysterious realities hidden. And these are the things that needs to be transferred and understood and carried on. Because when we understand them, then we will carry them on a higher level. That's what is required. And the other thing is that, on the metaphysical level, that research is needed, that mysterious research is needed, and explanation is needed. And at the same time, on the physical level, meaning that on the historical level, research is needed as well. For example, a person have done a research on what type of horses were ordered or brought to gallop over the body of Imam Hussein alayhi salam. They were known as heavy stallions. And there's a specific name of these horses which were peculiarly brought by Umar Asad, so that after they become victorious, that they will gallop these horses over the bodies of the Shuhada to celebrate their victory. These type of things. Three-headed arrow. What does really three-headed arrow means? Does it mean it has three heads like this? Or does it mean that it is sharpened from the three sides, not just from at the point, for example? Why only 3 types of three-headed arrows was brought by Hurmula? Why not more? Was it really expensive? What it is used for? And many other factors. The war, the art of war, which was used by these shuhada, how they fought, the armor, and how the whole battle occurred. This also is a very interesting, research that is required and needed. I mean, the emotions are so high, like today, Maulana was mentioning about the nasheeb, about the horse kind of
dipping a bit in order the horseman, in order that the rider gets down. But was it for that, or was it for that Zainab was watching? These are the things that there are so much in the story of Karbala, right? Then the other aspect, the aspect of fiqh, the mujtahideen, the fatwa and fiqh itself, that itself is a whole new, door of science, of fiqh within the Karbala that we have seen, right? Sham-e-Gharibaan, it's the eve of martyrdom of Shuhada-e Karbala. As soon as when Imam Hussein was slain, was killed, Umar Asad ordered that the body should be disrespected. And we want to celebrate the victory so that these stallions should gallop over the bodies. And as soon as he announced, because there were sounds of horses, because there was a sound of silence. You have war going on, and then all of a sudden there is silence. Why? Because the head of Hussein is already on the spear. There's no more sounds of sword or arrows or spears or people calling, right? Yelling. But there was a silence. After that silence, once again there was a sound of horses. Then Zainab said, "What's going on? What are these new sounds coming from the ground of Karbala, from the battlefield?" He says, "Umar Asad have brought horses upon which," and he's announcing who is there to gallop horses over the bodies of the Shuhada. Here, the clan of Hur, they came and they said that, we cannot allow our master's body to be galloped, disrespected like that. He made a mistake, we understand. Please give us the body, we'll take it. That's why he's buried somewhere else, as you know, right? Then Habib ibn Mazair, who was, Kindi, who was from the Kufa, and they were there, Kufans were there too. And they also claimed the body of Habib. It's been mentioned that one after the other, bodies were claimed. The known bodies, or perhaps the other bodies, were somewhere else in the plain of Karbala, whatever that may be the case. But what's been mentioned is that there was only one body remaining in the plain of Karbala, and that was the body of Hussein. Zainab ran out and he says, "Umar Asad, vow unto you." And then she calls that, "Is there anyone to claim the body of the son of Zahra?" But there weren't anyone. And here, 20 men, 20 horses, and the body of Hussein. And the body of Hussein, like as I said, the only shaheed whose head was severed while he was alive was Hussein. The only shaheed whose head was severed from the neck was Hussein. And the body of Hussein in the plain of Karbala, without his head, and you have these horses on the body of Hussein. As in the Ziyarat that we recite of Imam Zaman, "My salams and salutation to that shaheed on whose body the horses galloped. His body were under the hooves of the horses, where his body became flat with the ground of Karbala." The person who was galloping, as a pride, he tells to Ibn Ziyad that when I was galloping my horse over the body of Hussein, I could hear the cracks of the ribs of Hussein. This finished, one after the other. The Masa'ib intensifies after Imam Hussein's death. Then it's ordered that they should burn the tent and loot the tents, whatever is inside. They attack the tents. Ladies from one tent to the other, as these tents were torched, one tent to the other, they were moving in order to protect their life. Finally, they entered the tent of Imam Zainul Abidin to protect their hijab, to protect their children and themselves. And this tent in which Imam Zainul Abidin alayhi salam was, and he was not even in a state of walking, this tent was burnt as well. Why? What's the reference for this? Imam Zainul Abidin says that, "I remember the day of Ashura, how we disperse
when you break a tasbih, and when the beats of this tasbih fall on the ground and how it dispersed, that's how the women and children dispersed from the tent, running out when this tent was burned. There's another report from sixth Imam, where Mu'tasim buries the door of the sixth Imam and it was burning, and all of a sudden Imam Sadiq alayhi salam was crying. And then he says, oh, why are you crying in this way? He says that I'm not crying because of this door is burned, but I'm seeing that how the tents of Hussein were burned and how women and children dispersed out from the tents of Hussein. So they torched the tents, they burned the tents. And here in this tent you have Imam Sajjad alayhi salam who cannot walk out. Muslim bin Hamid, apparently the narrator, the journalist who was there, he reports that I saw a lady coming out of a tent lifting a young lad. It was Imam Sajjad alayhi salam who was brought out by Hazrat Zainab to protect the life of Imam Sajjad alayhi salam. The enemy started to snatch one thing after the other, one property after the other. And the time occurred when the captives were free in Sham. Rabab requested something. Rabab requested what? Rabab requested the earrings of Sakina and the cradle of Ali Asghar, the burned cradle of Ali Asghar. So this means that when the enemies attacked the tents, they even snatched the earring of Hazrat Sakina salamullah alaiha. The riwayat also is in the Maqtal of Abi Maqnaf that the enemies, when they were snatching this earring, they were saying that, she says that, do you know who we are? We are the Ahl Bayt. He says, I know who you are. But if I don't do it, somebody else will do it. That's why I'm doing it. Right? The blood dripping from the earlobes of Sakina. This is how the yatim and orphan was treated. Then after the burning of the tents, you have, because they stayed overnight in Karbala, because they were taken to Kufa the next day, or on the 12th, as they say. Now, after burning of the tents, they are settled in the tents, crying for their loved ones. And after burning of the tents, as they disperse, and Hazrat Zainab salamullah alaiha was given the responsibility to take care of Sakina, she did a head count when she brought the children. When she did the head count, there was Sakina who was missing. And there's a special recommendation from Hussein to Zainab about Sakina, right? And here Zainab started looking, with the help of Farwa, the children in the desert as they have dispersed, trying to find Sakina. Some of the bodies were on the ground, right? And they may have gone unconscious, so they were turning the bodies which were on the plain of Karbala. Some of the children's body were on the ground and they were turning that, boys or girls. And all of a sudden it says that Zainab reached to a body, and as she turned that body, it was the body of her own son On, who she hasn't cried, who she didn't even, worried about to really take him somewhere or protect him as such. And then she goes looking for Sakina. As she reaches to a body, which was the body of Hussein, and Sakina was sleeping on the chest of Hussein. And here Zainab inquires that, what happened? How did you get here? Sakina says, when the tents burnt, I came out and I saw a man outside, and I asked him that which way is Medina? She says, it's very far, little one. Which way is Kufa? That's very far, little one. Then she says that, which way is the Qatlga where my father is? Then this man pointed out me to that way, and I was running in that direction calling my father. When I was calling my father, all of a sudden I saw a body without its head raising its hand saying, Ilayya, Ilayya, ya Sakina. Come to me, O Sakina. That's where I went to my father and I slept on the chest of the father. And here Zainab took Hazrat Sakina to the burned tents and she was guarding there. And here, all of a sudden, she sees that some torches coming from the side of the Kufa. Food was brought. Water was brought. By those women and children who were there in the nearby villages, perhaps in Kufa, as they heard that they have lost their men, as the food and water was brought and given, it was given to
Imam Sajjad alayhi salam, because he was the caretaker of it, and then Imam Sajjad alayhi salam offered this water to everybody, and he offered to Zainab, and Zainab wasn't drinking water. And then Zainab said, you should give to the young one. And then Sakina was called. When this water was given to Sakina, Sakina started to cry and started running looking for Ali Asghar. And Zainab is not drinking this water. Like I said, Karbala is a meeting place of heaven and earth. Zainab is not drinking. Sajjad is saying, drink Amme Jan, drink, oh my aunt, drink water. She's not drinking. And then here Imam Sajjad says that if you don't drink, look towards the heaven through my fingers. And then she sees that Imam Hussein alayhi salam at the corner of the fountain of Kawsar, not drinking water, and saying that till Zainab drinks, I will not drink water. Allah lanatullah, ala qawm az-zalimin, sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalibin yanqalibun. Ya Hussein, Matame Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Hai mere Abbas, hai mere Abbas, hai mere Abbas. Jab rida sar se chinin mein sada deti rahi, tu na aaya Ghazi. Jab rida sar se chinin mein sada deti rahi, tu na aaya Ghazi. Ali Imran ne kaha aur zinda ne kaha, ye behan keh di bari, tu na aaya Ghazi. Jab rida sar se chinin mein sada deti rahi, tu na aaya Ghazi. Humko pani na mile, teri khushbu to rahe, teri bazu na kate, chahe machki zaach de, he magar ho na saka, tere bazu hai juda, mujh pe hai tash na nabi, tu na aaya Ghazi. Jab rida sar se chinin mein sada deti rahi, tu na aaya Ghazi. धूप में टूटा शजर, तुझसे आबाद तगर, है बरहना मेरा सर, क्या नहीं तुझको खबर, ए अलमदारे वफा, इस बहन को वाखुदा, तुझसे दहरस tu na aaya Ghazi. Jab rida sar se chinin mein sada deti rahi, tu na aaya Ghazi. Aa gayi Sham-e-Alam, lut ge ahle haram, रेत पर जलती हुई हो गया तंदा अलम, पुरस देने के लिए, मुझसे मिलने के लिए आ गए अबाबाली, तू ना आया Ghazi. जब रदा सर से चुनी मैं सदा देती रही, तू ना आया Ghazi. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya Hussein. जलते हुए खेमों से ज़ैनब की
अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खेमों से ज़ैनब की सदाई अब्बास कहाँ हो तुम ना सर पे रही चादर ना सर पे रही चादर ना मेरा बचा बाई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खेमों से ज़ैनब की सदाई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खेमों से ज़ैनब की सदाई अब्बास कहाँ हो तुम अब्बास चले आओ क़ैमों में गरीबों के भूखे और प्यासे हैं लूटे हैं नसीबों के सजाद को होश नहीं सजाद को होश नहीं कुलसूम भी घबराई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खेमों से ज़ैनब की सदाई अब्बास कहाँ हो तुम शबीर बदारा में तीरों से प्यासा है तीरों से हुआ चलनी मजलूम कलाशा है ना कफन मिला इसको ना कफन मिला इसको ना कब्र है बनवाई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खेमों से ज़ैनब की सदाई अब्बास कहाँ हो तुम जलते हुए खेमों से ज़ैनब की सदाई अब्बास कहाँ हो तुम I'm going to be next to Good job, Jaffer. Zen, I'll hold it for him. Yeah, I'm good. Abbas, Abbas, Ya Abbas, Ya Abbas, Saqai Sakina, Abbas, Abbas, Saqai Sakina, Abbas, Abbas, Zainab का सहारा
Now all the kids line up and you'll go back to the class in one line. Jazakallah. All the kids, please, brothers, make for the way for them to go back. Ali, please better lead the class, lead all the kids. Jazakallah. Let's have a loud salawat for all these kids, their parents, and Maulana Sayyid Jawad Wahidi, who has been working hard in this Muharram camp with all these kids, girls and boys. And you can see what ICM is doing. The Islamic Center of MOMIN, their camps, their education center. This is what we want to develop our generations into. Inshallah ta'ala, you will see a better result out of all this. Let's recite a loud salawat for all of them, please.
Brothers, as you know, we need to connect with our sisters. So I would request all brothers to first try to fill up this area of the hall so that then we can have a, once we have the connection, then we can go this way. So I would please humbly request, we're not sure, otherwise we have to bring the Imam Janimas behind if there is not enough brothers to cover up all the way down. Jazakallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أشهد أن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله عليهم السلام حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله اللهم صل على محمد وآل محمد
يا لطيف يا جليل ارحم عبدك الذليل الضعيف اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تسبيح جناب زهرا سلام الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية وفوز بالجنة ورضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. On Ikram, there is a Surah Fatiha and Namaz Bashat request for Marhuma Ruqayya Ali bint Ismail Sayani, wife of Habib Ali, and requesting Surah Fatiha for Yawm Marumin, sponsors of the Niyah, Shuhada Islam, wa Kul Arwah al-Marumin al-Mahrumat, Sawab al-Fatiha. MOMIN Ikram, just few announcements for the upcoming programs at Islamic Center of MOMIN. Inshallah, tomorrow night will be the Ziyarat, the Soya Majlis, and the last Majlis of this first Ashura. The program starts the same way, 7 p.m. with Niyaz, 7:30 with Ziyarat Ashura, followed by the Majlis in English by Maulana Mirza Abbas Saab, followed by Salat al-Maghriban by Maulana Sayyid Jawad Wahidi, and then the Urdu program, Soz Salam and Mersia, followed by the Majlis by Maulana Abdi, ending with Matam and Ziyarat. There will be no program on Wednesday. Starting weekends, as you know, and the big nights, as per the dates, the announcements will become. The upcoming weekend, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday, 4 days, we are having Alim Maulana Sayyid Adil Abbas Saab coming over to recite Majalis. The timing for these for Thursday, Friday, Saturday. Thursday, Friday, Saturday. All the programs will start with Salat al-Maghriban, and afterwards, only on Sunday, we'll have a Majlis before the Maghriban, and we'll end with Maghrib Namaz. Please note this, the emails and the WhatsApp messages will be forwarded. So the upcoming program, we have a program tomorrow, the Ziyarat Majlis. We do not have any program for Wednesday. Then the next program starts on Thursday, Friday, and Saturday, and Sunday. Brothers, we as Shia community, we had taken some steps seriously when the old building was there during the month of Ramadan, when there was a lot of wastage of water. Now,
during Muharram and especially last few days, we have found a lot of water bottles half drank and just thrown away. Now, we cannot just blame on the kids. It may be grown-ups, we don't know. But then we, especially the followers of Shia of Imam Hussain, water is very essential for us. Just because we get it free, we cannot just waste it. We need to learn, we need to teach our kids, we need to teach everybody that please do not waste water. We all know all around the world what's the situation on the water. So the first thing we learn from our Islamic center, from our centers, is conserving water. So please, 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 today I myself had thrown quite some bottles. Other members of the community also try to pick up and throw them. Please try not to waste water. Water is very essential for us. Niyaz is being served. Sisters also, there is niyaz kept outside. For brothers also, you can have the niyaz after this. Just these were the announcements going forward, inshallah ta'ala. Requesting again all brothers and sisters, the way you have all been attending all these programs, please keep up that support of attending the programs. The organizing team is trying their best to get the best of alims to the Islamic Center of MOMIN. Bar Muhammad wa Ali Muhammad salawat. Brothers, requesting that a lot of MOMIN were sitting just at the entrance, so please if you can move forward. There I see a lot of spaces in the front. So, and I will request, when Maulana stands up for the Isha Salat, you can all stand up shoulder to shoulder, and there will be a lot of empty spots that you can fill up, so that the brothers who are coming late, don't have issue in attending this Salat. Jazakallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Salawatullahi wa salamuhu alayhi. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن عليا ولي الله عليه الصلاة والسلام. أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله عليه الصلاة والسلام. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استغفر الله ربي وأتوب إليه إن صلاة استغفر الله من كل ذنوب استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر حول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد بحول الله وقوته أقوم وأقعد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر أستغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. حول الله وقوته أقوم وأقعد. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا لطيف ارحم عبدك الضعيف. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تسبيح جناب زهرا سلام الله عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ادخل على أهل القبور السرور. اللهم اغن كل فقير. اللهم اشف كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم اصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اغن عنا الدين واغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم
Omikram, the Farsi language Sham-e-Gharibaan Majlis will be held in room number 3. All those brothers and sisters who would like to attend, the Farsi language Sham-e-Gharibaan will be held in room number 3.
Muhammad Ikram, we will not be waiting for 9:30. It's Sham-e-Gharibaan, so inshallah very soon, within 2 to 3 minutes or maximum 4 minutes, we'll be starting the program. And I'm requesting Brother Danish Naqvi, if he's around, and Brother Adil, if they are around, to please, or whoever can assist in reciting Mersia and supporting the main Mersia reciter is most welcome to come over to the member area, please. Jazakallah. ये आगे ना अमीर है अपना वसीम भाई, आदिल भाई, अमीर, इसको भी ले आओ। नशीनों पे सुगवारों का गरीब देते हैं पुरसाद तुम्हारे प्यारों का। सलाम पर जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पर सीरी की खाक आती है। सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर। मोमिन इकराम, ये वो शाम, मुसीबतों की शाम, अहले बैत के लिए बहुत बड़ी मुसीबतों की शाम है, इसीलिए इसको शाम-ए-गरीबा कहा गया है। गरीबों की शाम है। क़त्ल हुसैन हो चुका है, शहदाओं का सर कट चुका है, खैमे जल चुके हैं, अहले बैत असीर अब होने को है। आज की शाम का आगाज़ मैं अपने भाई दानिश नकवी साहब से करूँगा कि वो आके सलाम बारगाह सैयद शुहदा में अपना अकीदत पेश करे। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन, मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। तीरों पे था रखा हुआ लाशा हुसैन का, डूबा हुआ लहू में था कुर्ता हुसैन का।
आवाज थी हुसैन की बहना कफन कफन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। एक दिल पे दाग मैंने 72 उठा लिए। कुछ दाग मैंने कल्ब के अंदर छुपा लिए। छुपते नहीं छुपाने से दागे रसन रसन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। कासिम की लाश लाए थे दामन में शाहिदी। सेहरे से बेनियाज थी नौशाह की जबी। एक शब भी रह ना पाई थी जिस की दुल्हन दुल्हन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। बरछी कले जाए अली अकबर में जब लगी। बाबा को दी सदा कभी आवाज मुझको दी। कहता था सीना थाम के अम्मा चुभन चुभन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। गाजी के बाद और क़यामत गुजर गई। प्यासों की आस टूट के बन में बिखर गई। एक शोर अल्लाह तश का था बाबा दहन दहन। मैं भाई भाई कहती थी राशा बहन बहन। आई नारास दो घड़ी परदेस की फिजा। कुनबा शहीद हो गया मेरा घर उजड़ गया। परदेस देश गैर का अपना वतन वतन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। गुर्बत में कत्ल हो गया मजलूम बेवतन। मैं भाई भाई कहती थी लाशा बहन बहन। सलावत सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज महसन जज़ाकल्लाह दानिश। इकराम किया रेड कलर की गाड़ी है जिसका नंबर है NYH 3769 NYH 3769. This car is very wrongly parked and it is blocking the parking lot. Appreciate whoever is the owner. Please, if you can remove this car. It's a Kia red car. Texas plate number NYH 3769. NYH 3769. अब मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे मोहतरम जनाब वसीम रिजवी और साथियों से
कि वह आके सलाम और मरसिया बारगाह सईद शुहदा में पेश करें। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। मोहम्मद और मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली मोहम्मद वाले मोहम्मद। रुबाई के चंद चार मिसरे। अब्दो माबूद के रिश्ते को बताने वाले अब्दो माबूद के रिश्ते को बताने वाले जादे हक में कदम को ना हटाने वाले जादे हक में कदम को ना हटाने वाले सर कटा कर बिना तबलीग को छोड़ा शैने सर कटा कर बिना तबलीग को छोड़ा शैने ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले अब्दो माबूद जिस तरह मंजिले सब्रो रजा ज़ैनब ने की जिस तरह मंजिले सब्रो रजा ज़ैनब ने की उम्मते जद के लिए हक से दुआ ज़ैनब ने की करबला के वाक़े में रंग दोनों ने भरा इब्तिदा शबीर ने और इंतहा ज़ैनब
में से आज रात शब-ए-गरीबा की मुनासबत से दर्दो अलम का मरकज़े एहसास बन गई, दर्दो अलम का मरकज़े एहसास बन गई, बेआस काफ़िले के लिए आस बन गई, बेआस काफ़िले के लिए आस बन गई, दिन ढल गया तो शाम-ए-ग़रीबा के साथ ही, दिन ढल गया तो शाम-ए-ग़रीबा के साथ ही, बेटी अली की हज़रते अब्बास बन गई, दर्दो अलम का मरकज़े। फातिहा। बर मोहम्मद और मोहम्मद ज़हरा जफ़ाए बानिए शर देखती रही, ज़हरा जफ़ाए बानिए शर देखती रही, कटता रहा हुसैन का सर देखती रही, सीने में माँ का दिल था मगर देखती रही, और खेमे से बाहर सुए दर देखती रही, और खेमे से बाहर सुए दर देखती रही, रन में जो शोर कत्ले शहे करबला हुआ, एक चीख मुंह से निकली के अम्मा ये क्या हुआ, एक चीख मुंह से निकली के अम्मा ये क्या हुआ, तड़पा जो दिल तो खेमे में ज़ैनब न रोक सकी, उठी बड़ी कना से टकरा के गिर पड़ी, संभली जिगर को थाम के फिर उठ खड़ी हुई, मक्तल के सेंत ठोकरें खाती हुई बड़ी, मक्तल के सेंत ठोकरें खाती हुई बड़ी, कुछ तन बदन की सुजती न चादर की फिक्र थी, मक्तल पे थी निगाह बिरादर की फिक्र थी, मक्तल पे थी निगाह बिरादर की फिक्र थी, पहुंची करीब मक्तल सालारे करबला, देखा
के कट चुका सरे अतहर हुसैन का रेगे तपा पे है तने अक़दस पड़ा हुआ रे प्यासे का जिस्म तो है खून भी जमा हुआ प्यासे का जिस्म तो है खून भी जमा हुआ पहले तो बेयकीनी में दो गाम हट गई फिर थर थरा के लाशें सहे से लिपट गई फिर थर थरा के लाशें सहे से लिपट पड़ी चिल्लाई सर को पीट के भैया चले गए जंगल में मुझको छोड़ के तन्हा चले गए तुम ही तो थे बहन का सहारा चले गए दुनिया ही खत्म हो गई तुम क्या चले गए दुनिया ही खत्म हो गई तुम क्या चले गए अब्बास व कासिम व अली अकबर कोई नहीं रबे आसरा हूँ अब मेरे सर पर कोई नहीं बेआसरा हूँ अब मेरे सर पर कोई नहीं भैया छिनी जो सर से रिदा क्या करूँगी मैं लूटेंगे जब ये अहले जफा क्या करूँगी मैं टूटेगी जब बला पे बला क्या करूँगी मैं मेरा तो कोई भी न रहा क्या करूँगी मैं मेरा तो कोई भी न रहा क्या करूँगी अरे अम्मा चली गई मेरे बाबा चले गए अब तुम भी मुझको छोड़ के तन्हा चले गए अब तुम भी मुझको छोड़ के तन्हा चले गए भैया खिंचे मरीज का बिस्तर तो क्या करूं जल जाएगा वारे असगर तो क्या करूं छीने शकी सकीना के दो हर तो क्या करूं लग जाए आग खेमों के अंदर तो क्या करूं लग जाए आग खेमों के अंदर तो क्या अरे सिमरे लई सकीना के कोड़े लगाएगा मैं क्या करूंगी मुझसे तो देखा न जा मैं क्या करूंगी मुझसे तो देखा न जाएगा जरा जफाए बानिए शर देखती Please recite Allah Salawat for all the MOMIN who recited it. Muhammad. किसको मनाए ज़ैनब किसको संभाले ज़ैनब किसको मनाए ज़ैनब किसको संभाले ज़ैनब हैरान व परेशान है वो कर्बो बला में ज़ैनब। इल्तिमास करूँगा मौलाना हाफिज़ साहब से
कि शाम-ए-गरीबा की मजलिस के लिए मेंबर पे तशरीफ़ लाएं। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। मोमिनीन, शाम-ए-गरीबा की मजलिस से ऐलान तो हम नहीं कर सकते, इसीलिए अभी ही मैं कह रहा हूँ, आप लोग जो नौजवान बैठे हैं मेरे सामने और आप लोग भी कोशिश करें अभी से ही आगे आगे आ जाएं। अभी थोड़ी देर में मोमिनीन और अंदर आ जाएंगे और सब मसाए भी चल रहा होगा, मौलाना भी ऐलान नहीं कर सकते उस दौरान, तो अभी से आप लोग आगे आगे आ जाइए। जज़ाकल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। अज़ादारान इमाम हुसैन आपको कोई गम न दे सिवाय गम शब्बीर के इंशाअल्लाह। नमाज वहशत और सूरह फातिहा की तिलावत की दरख्वास्त की गई है। मरहूम मज़ाहिर हुसैन, फादर ऑफ डॉक्टर नासिर हुसैन, जिनका डिट्रॉइट में इंतकाल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियामि यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अहसनल्लाहु लकल अज़ा फ़ी वलदिकल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अमीरल मुमिनीन, अहसनल्लाहु लकल अज़ा फ़ी वलदिकल हुसैन। अस्सलामु अलैकी या फ़ातिमतुज़ ज़हरा, अहसनल्लाहु लकिल अज़ा फ़ी वलदिकल हुसैन। अस्सलामु अलैका या हसनल मुज्तबा, अहसनल्लाहु लकल अज़ा फ़ी अख़ीकल हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़नाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाहि अबदन मा बक़ीत व बक़ियल लैल वन नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। आज़ादारान मज़लूम करबला, खुदावंद आलम आपकी आज़ादारी को कबूल फ़रमाए। बीबी सैयदा अपनी पाकीज़ा रुमाल में हम गुनहगारों की गुनहगार आँखों से जारी होने वाले आंसुओं को जगा दें। आज ये पुरसे की मजलिस है। अगर क़यामत के दिन की शाम का कोई तसव्वुर मुमकिन हो तो रोज़े आशूर की शाम यकीनन ये शाम क़यामत है। करबला में आले रसूल लुट गई, फ़ातिमा का आबाद चमन एक दोपहर में बर्बाद हो गया। गुलदस्ते शहादत के फूल बिखर गए। मौला इमाम ज़माना आपकी बारगाह में किस किस का पुरसा दें। मौला, आपने ज़ियारत नाहिया में फ़रमाया है, मेरे जद्द मज़लूम हुसैन, मैं हर सुबह शाम आपकी गम में रोता हूँ और जब मेरी आँखों के आंसू खुश्क हो जाते हैं तो मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूँ। मौला, जब आप रोज़ आंसू रोते हैं और खून रोते हैं तो
तो शाम-ए-गरीबा आपकी क्या कैफियत होगी। हम अदना अज़ादारों की हालत ये है कि बदन थका हुआ भी है तब भी आँख से आंसू थमते नहीं हैं। मौला आपके दिल पर क्या गुज़र रही होगी। किसी आलिम दीन के ख्वाब में मौला तशरीफ़ लाए, मौला आपने जो फरमाया है कि मैं आपके गम में जद्द मज़लूम रोज़ रोता हूँ और मैं आंसुओं के बदले खून रोता हूँ। मौला ये कौन सी मुसीबत है। ये क्या मौला अब्बास के शाने कटा कर सो जाने की मुसीबत पर रोते हैं। कहा मेरे चचा अब्बास की शहादत बहुत दर्दनाक है, लेकिन ये वो मखसूस मुसीबत नहीं है। मौला क्या कासिम के बदन की पामाली का ये बड़ी मुसीबत है, मगर ये मुसीबत वो मुसीबत नहीं है। मौला क्या अली असगर के गले पे तीरे से शोभा चला, ये वो मुसीबत है। का दर्दनाक मुसीबत है, मगर ये वो मुसीबत नहीं है। मौला क्या अली अकबर शबीह रसूल के सीने पर सिना लगा, क्या वो शहादत अली अकबर की मुसीबत है? नहीं। मौला फिर कौन सी मुसीबत है? हर करबला की हर मुसीबत अजीम मुसीबत है। हुसैन की प्यास, हुसैन की तन्हाई, गुरबत हुसैन, मज़लूमियत हुसैन, ये सब अपनी जगह पर मौला, मगर वो मखसूस मुसीबत क्या है कि मेरी पुप्पी ज़ैनब का सर से चादर छीन लिया जाना। मैंने अर्ज कर दिया, आपने सुन लिया। मौला आपने सुना, जरा अपने जद सैयद सज्जाद के दिल से पूछिए। शाम-ए-गरीबान से कूफा, कूफे से शाम का बाजारो दरबार, अज़ादारो करबला की सरजमीन पर मक्तल की रेत पर शुहदा के बिखरे हुए लाशें हैं, सर तन से जुदा कर लिए गए हैं। शुहदा के पामाल बदन हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ज़मीन रोती हुई देखी गई, आसमान से खून की बारिश हुई, दरख्तों में खून के आसार देखे गए, बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा को गिरियाँ देखा गया, जिन्नात ने गिरिया किया, मलाइका ने गिरिया किया, कुल कायनात सरापा एहतजाज गम हुसैन है। और हालत ये है शहादत की तारीख़ में, आपने ज़ोहर असर के वक्त मसाइब सुने, बस वहीं से मैं मुत्तसिल कर रहा हूँ इस सिलसिले मसाइब को कि सरज़मीन करबला पर क़यामत आ गई। अला क़ुतिल हुसैन बि करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बि करबला। रावी बयान करता है कि जैसे ही मज़लूम करबला की शहादत वाक़ हुई और एक क़यामत का मंज़र था, हालत ये थी कि ज़ुलजनाह भी सर पटकता था। अज़्ज़लीमा अज़्ज़लीमा, बहुत बड़ा जुल्म हो गया, बहुत बड़ा जुल्म हो गया। ज़ुलजनाह अपने आप को ज़ख्मी करते करते एक मरतबा दरे खैमा पर जाकर रुक गया। हमीद बिन मुस्लिम नकल करता है, मैंने देखा बीबियाँ इस्तक़बाल के लिए आई। ये मंजर ज़ियारत नाहिया में भी बयान किया गया है कि जब ज़ुलजनाह दरे खैमा पर जाकर रुका तो बीबियाँ इस्तक़बाल के लिए आई। कोई ज़ीन के बोसे ले रही थी, कोई ज़ुलजनाह से कलाम कर रही थी, कोई ज़ुलजनाह के कदमों से लिपट रही थी। रावी बयान करता, मैंने देखा एक 3-4 साला बच्ची दरे खैमा के बाहर निकल आई। बच्ची ने अपनी बाहें घोड़े के गले में डाल दी और सवाल पूछती है, या जवाद असुक याबी हम कुतला अत्शाना। ए ज़ुलजनाह, मैं समझ गई मेरा बाबा कत्ल कर दिया गया, मैं समझ गई मैं यतीम हो गई, मुझे पता चल गया मेरा बाबा शहीद हो गया, लेकिन जरा मुझे आयस में बावफा इतना बता कि मेरे बाबा को पानी पिलाया गया। मेरे बाबा को पानी पिलाया गया। अल्लाह रे मारिफत सकीना, खुद प्यासी बच्ची, तमाम बच्चों की प्यास बुझाने के लिए अबुल फजल अब्बास से नुमाइंदगी करने वाली सकीना को अतश हुसैन की कितनी मारिफत भी थी, कितना ख्याल,
इसीलिए हुसैन ने कहा था ना, ये सकीना है वो घर मुझे पसंद नहीं जिस घर में रबाब और सकीना ना हो। अज़ादारों, दुनिया का दस्तूर है, दुश्मनी की एक हद होती है, जनाजों के साथ दुश्मनी नहीं होती। जितने भी बड़े मुखालिफ हों, जितने भी बड़े दुश्मन हों, जितने भी खबीस हों, अगर किसी के घर में बड़ी मुसीबत आ जाए तो कम से कम कुछ देर के लिए ही सही हमदर्दी का इजहार होने लगता है, चाहे जितना बड़ा दुश्मन हो। ये भी मज़लूम करबला की मुसीबत का और गुर्बत का एक रुख है कि हुसैन लाशों पर लाशें उठाते रहे, कोई ताज़ियत पेश करने वाला नहीं था। अब्बास मर गए, अली अकबर गुजर गया। अब्बास मर गए, अली अकबर गुजर गया। हमसे किसी ने ये भी न पूछा कि क्या हुआ। क्या कोई सकीना को तसल्ली देने वाला था? क्या कोई ज़ैनब की बारगाह में ताज़ियत पेश करने आया? क्या कोई सहमे हुए यतीम बच्चों के सरों पर हाथ रखने को आया? नहीं। आप दोनों एतबार से देखें। एक तरफ उमर साद ने हुक्म दिया, लोगों जाओ हुसैन के जनाजे पर घोड़े दौड़ाओ, अल्लाह अकबर। पहले से जख्मी छलनी बदन फर्जंद ज़हरा का 10 घोड़ा सवार। अल्लाह ज़ैनब कितना तड़पी होंगी। सैयदे सज्जाद, देखिए शाम-ए-ग़रीबा ही आपकी इस सिलसिले की आखिरी मजलिस है। कल भी मजलिस होगी इंशाअल्लाह। पुरसे को आप तशरीफ ज़रूर लाएंगे। मगर तारीख़ के एतबार से हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास की शुजाअत का बड़ा चर्चा है, हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का बड़ा मुकाम है। लेकिन आज की शब ज़ैनब का काम क्या है? ज़ैनब भी है, ज़ैनब अब्बास भी है, ज़ैनब हुसैन भी है। शाम-ए-ग़रीबा के बाद, असर आशूर के बाद हुसैन ने सैयद सज्जाद और जनाब ज़ैनब को जो ज़िम्मेदारी का परचम दिया है, अब वो परचम लेकर अज़मत अहले बैत, अज़मत क़ुरान, अज़मत इस्लाम का परचम ले जाकर शाम तक लहराना है और क़यामत तक ज़िक्र शुहदाए करबला के ज़रिए से हुसैनियत की जीत का ऐलान भी करना है और ज़माने पर हक़ का ऐलान भी करते रहना है। ये सिलसिला जारी है। मैं एक जज्बाती एतबार से तस्वूर पेश कर रहा हूँ कि देखें, एक मुकाम हज़रत अबुल फ़ज़ल अब्बास का अपनी जगह, अब्बास का सब्र, अब्बास की शुजाअत अपनी जगह। लेकिन आज अब्बास का सब्र और अब्बास की शुजाअत भी ज़ैनब को दाद दे रही होगी। अबुल फ़ज़ल अब्बास इमाम हसन मुश्तबा के ज़माने में एक शख्स शाम से आया था और आने के बाद उसने अपने असा को और लकड़ी को जहर से मसमूम करके ले जाकर इमाम मुश्तबा के कदम पर ज़ोर से रख कर दबा कर इमाम के कदम को ज़ख्मी कर दिया था। जैसे ही अब्बास को पता चला, अबुल फ़ज़ल अब्बास उसका पीछा करते हुए गए। मदीने के बाहर एक मुकाम पर उससे वो मिला, उसको वहीं पर वासिल जहन्नम कर दिया। अब्बास को ये बर्दाश्त न था कि जनाब इमाम हसन मुश्तबा के कदम पर कोई एक चोट आ जाए। अब्बास ज़रा आकर आज ज़ैनब को सहारा दो, सैयदे सज्जाद को सहारा दो। हुसैन का बदन पामाल हो रहा है। जब असबाब लूटा जाने लगा, वो पुराना लिबास जिसे चाक किया गया था, माफिज़ा से आखिरी मौके पर हुसैन ने लिया था, वो लिबास भी लूटा जा रहा है। अज़ादारों, दिल थाम कर सुनना, जब कोई अम्मामे को लूट रहा है, कोई सिपर लूटने की कोशिश में है, ऐसे में एक जालिम आगे बढ़ा, हुसैन की उंगली से अंगूठी उतारना चाहता है, अंगूठी नहीं मिलती है। वो जालिम बजदल बिन सलीम उंगली को हुसैन की कता कर ताज़ियत पेश करना तो दूर की बात है, प्यासे बच्चे तड़प रहे हैं, कोई पानी पिलाने वाला नहीं है, सहमे हुए भी हैं, भूखे भी हैं, यतीम भी हैं, गरीब भी हैं, दाग दीदा भी है, गिरिया तक नहीं हो पाया है। लेकिन अल्लाह, ये अनोखी मुसीबत अहले हरम की, खानदान अहले बैत की बच्ची हाय बाबा कहती है तो अब तमाचे लगने लगे हैं।
बच्चे अपने अजीज़ों को याद करते हैं तो तमाचे लगाए जा रहे हैं, और उधर पामालिए बदनहाए शहदा के साथ अब हुक्म दिया जा रहा है कि असबाब लूटा जाए। बदन पामाल हुआ इसीलिए इमाम हुसैन की जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन की ज़ियारत की कुछ मखसूस कैफियतें हैं। यूँ तो ज़ियारत रसूलुल्लाह की भी है, मौला अमीरुल मोमिनीन की भी है, जनाब सैयदा की भी है, हर इमाम की ज़ियारत है। मगर ज़ियारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बाकी दूसरे कलाम के साथ जब हम इमाम को या मासूम को ख़िताब करते हैं तो उनके अलग अलग अलक़ाब का बयान होता है। जैसे रसूलुल्लाह के लिए अस्सलामु अलैक या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या सफ़ी अल्लाह, या ख़ातिमुन नबिय्यीन, रसूलुल्लाह के मुख्तलिफ़ अलक़ाब बयान किए जाते हैं। इमाम हुसैन की जब ज़ियारत होती है तो अलक़ाब और मीरास विरसा सब बयान करने के साथ एक अनोखी कैफियत है जो आम तौर पर दूसरी ज़ियारतों में नहीं मिलती। वो क्या कैफियत है? सलाम हो हुसैन के सर पर, सलाम हो हुसैन की उस पेशानी पर जो पत्थर से ज़ख्मी हुई, सलाम हो उस गले पर जो ज़िबा भी हुआ और नहर भी हुआ, सलाम हो सीने पर जिसे तीरे से शोभा लगाया गया, सलाम हो उस सर पर जो नेज़े पे बुलंद किया गया। इमाम भी सलाम भेजते हैं, अस्सलामु अला अज़ाइल मुक़त्तआत, सलाम हो वो मक़तल के मैदान में बिखरी हुई आज़ा व जवारे पर। हुसैन के आज़ा व जवारे को सलाम पेश किया जाता है। अल्लाह अल्लाह, ये मज़लूमियत अबा अब्दिल्लाह हुसैन है और आपके बदन को पामाल किया गया, शहदा के बदन। और साथ ही साथ मुसीबत यहीं तक नहीं रुकी बल्कि सिलसिला आगे बढ़ा। एक मरतबा जालिम ने हुक्म दिया, ऐलान किया गया, जाओ खैमों पर हमले कर दो, असबाब लूट लिए जाएं, खैमों में आग लगाई जाए। शाम-ए-गरीबा है ना, यतीमों की शाम है। यतीमों के साथ, गरीबों के साथ क्या सलूक हो रहा है? सामान लूटा जा रहा है, खैमों को में आग लगाई जा रही है। अब वो जब खैमों में आग लगी तो खैमे भी जल रहे हैं, कुछ निशानियाँ लूटी जा रही हैं, कुछ निशानियों को जलाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, जिस बच्चे की माँ, वो बच्चा जो शिशमाह बच्चा था, उस बच्चे की माँ को कोई तसल्ली देना तो दूर की बात, उसकी एक झूले की निशानी है तो उसे आग लगा। वो तबर्रुकात जो जनाब सैयदा से मंसूब हैं उनको लूटा जा रहा है। जालिम नेज़ों के ज़रिए से बीबियों के सरों से चादरें छीन रहे हैं। और जब खैमों में आग लगती है, रावी कहता है, दूर से मैंने मंजर देखा कि जब बच्चे तड़प रहे थे, बीबियाँ इधर से उधर हो रही थीं, तो अली की बेटी ज़ैनब एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में, गोया कोई वज़नी शय, कोई कीमती शय को, शख्सियत को सहारा दे रही है। अल्लाह, ये मुसीबत सैयद सज्जाद भी है, ये जनाब ज़ैनब की गुर्बत का इम्तिहान भी है। अल्लाह अकबर। जब खैमे जलने लगे, बीमार का बिस्तर जलने लगा, सैयद सज्जाद तन्हा हो गए। ज़ैनब शायद आखिरी खैमा था। एक मरतबा बीवी ने पूछ लिया, बेटा सैयद सज्जाद बताओ क्या करें, यह आखिरी खैमा है, घर के बाहर निकल जाएं या खैमे के बाहर निकलें या यहीं जल जाएं। एक मरतबा सैयद सज्जाद ने फरमाया, फूफी अम्मा जान बचाना ज़रूरी है, खैमे के बाहर निकलिए। उलमा के दरमियान वैसे ये तो बहुत ही इब्तिदाई मसला है, क्या ज़ैनब को नहीं पता था कि जान बचाना ज़रूरी है? नहीं, अल्लाह रे मुहाफिज़ इमामत, अल्लाह रे मुहर्रिफ इमाम, इमाम को पहचानवाना चाहती है। जलते हुए खैमों के दरमियान भी सैयद सज्जाद से सवाल पूछ कर बता रही हैं, ज़ालिमो तुमने हुसैन को शहीद कर दिया तो क्या हुआ, एक वारिस हुसैन है। हाँ, ये सैयद सज्जाद की मज़लूमियत की इंतहा थी। रस्मी तौर पर बाकायदगी से मनसब इमामत लेने के बाद पहला जो हुक्म इमाम ने दिया वो ये था कि खैमों के बाहर निकलो। अल्लाह अकबर। बीबियां खैमों के बाहर हैं, जले हुए खैमे हैं, अब खैमों की राख बैठ रही है, बच्चों की तलाशी का काम हो रहा है, कौन बच्चा कहाँ है। बाज़ रिवायतें ऐसी हैं कि जब दुश्मनों ने हमले किए और जब घोड़ों की टापों के नीचे बच्चे आए तो उसी आलम में, इसी हंगामी हालत में कुछ बच्चे शहीद हो गए। दौड़ते हुए बहुत सी रिवायत हैं, कुछ झाड़ियों के दरमियान 2 फूल से बच्चों की मैयतें भी ज़ैनब व कुलसूम ने उठाई।
अब अब्बास नहीं है, शबे आशूर तक पहरादार अब्बास था। अब टूटा हुआ नेज़ा लेकर अली की बेटी ज़ैनब, उम्मे कुलसूम बच्चों की वो तलाश कर रही हैं, तीमारदारी का काम भी ले रही हैं और बच्चों को सहारा भी बनी हुई हैं। अजरुकुम अल्लाह, एक मरतबा बच्चों की शुमारिश का काम बढ़ा। अब बच्चे कहाँ हैं? क्या देखा? वो बुलबुल अहले हरम, वो हुसैन की प्यारी बच्ची, सोने पे सीने पे सोने वाली सकीना नजर नहीं आती है। सकीना कहाँ हो जब खैमों में आग लगी और जालिमों ने गोशवारे छीने, कान जख्मी हुए। रिवायत में जुमला बयान किया जाता है कि जब सामान लूटा जा रहा था, जालिम ने सकीना के कानों से गौहर छीना और छीनना चाहता था, तो बीबी ने एक जुमला कहा है। छोटे बच्चे अपने माँ बाप की बातों को, उनकी निशानियों को बड़े प्यार से रखते हैं ना। एक मरतबा बच्ची ने कहा, जालिम इन गोशवारों को रहने दे, ये मेरे बाबा की ईद की निशानी है। जालिम ये मेरे बाबा की ईद की निशानी है। अल्लाह अकबर, दामन जला, गोशवारे छिने हैं। बच्ची आगे बढ़ती गई। एक कोई सिन रसीदा अरब गुजरते हुए जब देखता है कि बच्ची का दामन जला हुआ है, आगे बढ़ता है कि शायद सहारा दे दे। का रुक जा, हम अहले बैत रसूल हैं, ना महरम हमसे करीब नहीं आ सकता। हाँ, अगर तू कुछ मदद करना ही चाहता है तो मुझे इतना बता दे, नजफ का रास्ता किधर से होकर के जाना। अल्लाह अकबर, अजरुकुम अल्लाह। जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम हुसैन की उस 3 साला बच्ची को तलाश कर रही, कोई नज़र, कहीं से कोई असर नज़र नहीं आता। आगे बढ़ती जा रही हैं, यहाँ तक कि एक सवार गुजर रहा था। पूछा, क्या तूने हमारी बच्ची सकीना को देखा? क्या मैंने किसी बच्ची या बच्चे को तो नहीं देखा। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मैं फुरात में अपने सवारी को पानी पिलाने के लिए लेकर गया तो किसी बच्चे के रोने की ऐसी आवाज़ आ रही थी कि जानवर ने पानी पीना बंद कर दिया। ज़ैनब आगे बढ़ती गई, सकीना कहाँ गई? देखिए, आपने जो असर की मजलिस में भी सुना था। आप जानते हैं जब हुसैन जा रहे थे तो बीबी ने, सकीना ने घोड़े के सिमों से लिपट कर एक सवाल पूछा था, बाबा आप मेरे सर पर ऐसे हाथ फेर दीजिए जैसे यतीमों के सरों पे हाथ फेरते हैं। एक दरख्वास्त की थी ना, और उसको ज़बान हाल में क्या कहा गया? नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा। नींद आएगी जब आपकी बू पाऊंगी बाबा, मैं रात को मक्तल में चली आऊंगी बाबा। नशे पे करीब ज़ैनब आई। अल्लाह अकबर, पामाल बदन है, लाश बेसर है। सकीना अपने बाबा के सीने पर सो गई है। बीबी ने आहिस्ता से शाना हिलाया। बेटी सकीना, किसी भी मैयत को, किसी भी जनाजे को पहचानने के लिए या सर उसके बदन से मुत्तसिल हो या उसका लिबास हो, तूने कैसे पहचाना? फूफी अम्मा, जब मेरे दामन को आग लगी, मेरे बाबा की ईद की निशानी मुझसे छीनी गई। मैं बाबा बाबा कहती हुई आगे बढ़ी। लाश बेसर से आवाज आई, सकीना इलैया। आपने मसाइब सुन लिए, मगर आपको याद दिलाऊं, जब जनाब सैयदा के बदन अथर को अमीरुल मोमिनीन ने गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, तो बच्चों से कहा, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। इमाम हुसैन गोशे में खड़े हो गए। अम्मा, जब तक आप बुलाएंगी नहीं ये हुसैन मिलने को नहीं आएगा। बंदे कफन टूटे, फातिमा ने हाथों को फैला दिया, हुसैन माँ के जनाजे से लिपट गए। मैं अर्ज करूंगा, मौला हुसैन, आप भी अपनी माँ के जनाजे से जाकर लिपट गए थे। वहां एक पहलू का जख्म था। आपकी सकीना आपके बदन पर आई है, छलनी बदन है।
तीरों पर रुका हुआ बदन है। बस आज़ादारों, आखिरी जुमला, अल्लाह आपकी आज़ादारी को कबूल फरमाए, हमारी मारिफत में इजाफा हो, हमारे ज़र्फ आगे बढ़ जाएं, हमारे अंदर से अना और दुनियादारी दूर हो जाए, पहले से जो हम थे उससे बेहतर होंगे तो ये हमारी आज़ादारी की कबूलियत की निशानी होगी। खुदा न खासा बात बात पर बहस करना, मजहबी चीज़ों में, मजहबी मामलात में, दीन में, आज़ादारी में पाकीज़गी न लेना, ये ज़र्फ़ की कमी है। इंशाअल्लाह हमारे ज़र्फ़ पाक से पाकतर होते जाएं और हमने जो कुछ सीखा, सुना, सुनाया, बोलने वाले भी, सुनने वाले भी सब मिलकर अमल करें। इंशाअल्लाह हम इमाम असर के काबिल बन जाएं। बस आज़ादारों, मैं अर्ज़ करूँगा, मौला हुसैन, ये सकीना आपसे मिलने आई है। मैं जसारतन एक जुमला अर्ज़ करूँ, आज़ादारों ज़रा दिल थाम के सुनना। क्या सकीना अपने बाबा से पूरी तरह से मुलाकात कर पाई? या मौला इमाम हुसैन, आप जब अपनी माँ के जनाजे से बदन अथर से लिपटे थे तो सर बदन से मुत्तसिल था। यहाँ आपकी सकीना से आपकी अधूरी मुलाकात है, सर बदन से मुत्तसिल नहीं है, ये आधी अधूरी मुलाकात है। और ये मुलाकात मुकम्मल कब होगी? जब सरे हुसैन तश्त में रखकर कैद खाने में लाया जाएगा। बच्ची अपने लबों को बाबा के लबों पे रख देगी, आवाज देगी, बाबा। किसने आपकी रगे गर्दन को कता किया? बाबा। किसने आपकी सकीना को यतीम कर दिया? मैं मजलिस तमाम कर देता, बस 2 जुमले अर्ज करने हैं जनाब ज़ैनब और इमाम हुसैन के हवाले से। देखें, दस्तूर ये था कि जब भी कोई शहीद घोड़े से गिरता, इमाम हुसैन के आवाज़ देता, आखिरी सलाम पेश करता, तो मौला अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन तेज़ी के साथ उसके सराने पहुँचते, उसके सर को आगोश में लेते, जन्नत की बशारत देते, रुखसत फरमाते और फिर खुदा की बारगाह में हाथों को फैलाकर, परवरदिगार मेरी ये कुर्बानी कबूल कर ले। जब ज़िबह अज़ीम की कुर्बानी वाक़े हो गई, असर आशूर, रसूल का नवासा शहीद कर दिया गया। वशिम्र जालिसन अला सदरे, बोसगाहे रिसालत कता कर दी गई। जिसे बार बार रसूलुल्लाह ने जिस गले के, जिस सीने के बोसे लिए थे, उस सीने को छलनी कर दिया गया, उस गले को कुंद खंजर से ज़िबा कर दिया गया। मगर एक फरीज़ा ज़ैनब को अदा करना है। 11 मुहर्रम जब काफ़िला असीर करके ले जाया जा रहा था, बस इस मंज़र की तरफ इशारा करना है कि ज़ैनब पहुँची अपने भाई के लाशे पर पहुँची तो ख़ुद को नाक़े से गिरा दिया, मदीने का रुख किया, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, आसमान के मलाइका का आप पर दुरूद व सलाम हो। ना, ये वही हुसैन है जिसे आप दोष पर बिठाया करते थे, जिसके गले का बोसा लिया करते थे, जिसके लिए आपने नमाज को तूल दिया था, सजदे को तूल दिया था। आज मुरम्मलुम बिद्दिमा, खाक खून में गलता है, बियाबान की धूल उसका कफन बनी हुई है। बीबी के बैन ऐसे हैं कि बाज़ रिवायतों में बयान किया गया है कि जनाब ज़ैनब के बैन सुनकर दुश्मन के सिपाही बल्कि जानवरों की आंखों से आंसू उनके सिमों पर टपकते थे। और उसके बाद एक अनोखा काम जनाब ज़ैनब ने किया। वक्त आखिर रुखसत करते हुए बुलाकर कहा था, भैया मैं ज़रा आपके गले का आखिरी बोसा ले लूँ। ये आखिरी बोसा लिया था, ये सुन्नत रसूल थी। सीने हुसैन और गलोए हुसैन के बोसे लेना ये सुन्नत रसूल थी। लेकिन ज़ैनब ने एक कारनामा किया जो शायद इससे पहले कभी नहीं किया गया था। बीबी ने आलम तसव्वुर में कहा होगा, अज़ादारों दिल थाम के सुनना, नाना आपने मेरे भाई के बड़े बोसे लिए हैं, बाबा आपने मेरे भाई के बड़े बोसे बचपने से लिए होंगे, ए अम्मा आपने मेरे भाई को बहुत भाई के बड़े बोसे लिए, भैया हसन मुश्तबा सबको याद करके कहा होगा जनाब ज़ैनब ने, देखें पंजतन की आखिरी कड़ी आप सब ने मेरे भाई के बोसे लिए हैं और उसके साथ वक्त गुजारा है। लेकिन आज जैसा और जिस तरह से मैं बोसा लेने जा रही हूँ, न मेरे नाना ने लिया, न मेरे बाबा ने, न मेरी माँ ने। क्या किया? बीबी ने अपने लबों को हुसैन की कटी गर्दन पे रखा। यबना उखिया, ए मेरे माँ जाए, अब बारे मुसीबत नहीं उठता। भैया ये जरा अपने बीमार का आलम तो देख, भैया ये जरा सकीना के तमाचे तो देख। ज़ैनब
बयान करती रही, शायद बेहोश भी हुई और कुछ लम्हात गुजरे। एक मर्तबा बीबी ने हाथों को फैला दिया, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्ना कलील अल कुर्बान, परवरदिगारा हमसे ये कुर्बानी कबूल कर ले। मातम हुसैन। ख्वाहिश
कि कहाँ पाएगी सलाम खाक नशीनों पे सुगवारों का गरीब देते हैं पुरसाद तुम्हारे प्यारों का सलाम शर्म खाए जाती है खुले सरों पर सीरी की खाक आती है सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर कि जिनको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर असीर होके जिसे शामियों के हुसैन थे सिखाना अली के लहजे में मुसाफिरत में जिसे बेबसी दिखलाई निसार कर दिए बच्चे न बच सका भाई सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं बुझे जो प्यास तो इसकों के जाम हाजिर हैं न इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी तुम्हारी माँ भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढें तुम्हारा चाँद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढें अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी ज़मीन गर्म यतीमी की शक्तियाँ भी वो सीना जिस वक्त सोती थी अब कहाँ गई पहाड़ रात
सलाम तुमको शहीदों के बेकफन लाशों नहीं में इंसान कोई खुदा हाफिज़ दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज़ सलाम मेरे शहादत के गिर्द सैयारों सलाम तुमको रसूलों बुतूल के प्यारों बच्चे तो अगले बरस हम हैं और ये गम है जो चल बसे तो ये अपना सलाम या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं बायान अली से दरख्वास्त करूँगा नवाखानी के लिए आगे आइए। या हुसैन 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 हुसैन या हुसैन या हुसैन। शाम हाय शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम शाम हाय शाम
देती कफन तुझको भैया अगर सर पे रिदा मेरे होती, मैं देती कफन तुझको भैया अगर सर पे रिदा मेरे होती, अगर होते खुले हाथ मेरे तेरे जख्मों को हाथों से धोती। पाबंदे रसन सर पर रहना, पाबंदे रसन सर पर रहना, देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम, आए 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 शाम शाम, वो जिस ज़ैनब को तुमने बरादर कभी नजरें उठा कर न देखा, जिस ज़ैनब को रन्ने बरादर कभी नजरें उठा कर न देखा, वो हाथ रस्सी में मेरे बंधे हैं और सर पे नहीं मेरे पर्दा। कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, कैसे कूफे में जाऊंगी गाजी, जब बलवे में आएगा नाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम तेरे आवे शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम। वो तेरे आबिद पे तारी गशी थी और कुलसूम सहमे खड़ी थी, वो तेरे आबिद पे तारी गशी थी और कुलसूम सहमे खड़ी थी। वो कभी देखूं मैं जख्मी सकीना जिसके दामन में आग लगी थी, कभी रहूं मैं अपनी रिदा को, कभी रहूं मैं अपनी रिदा को, कभी देखूं मैं जलते ख़याम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम। तेरे बच्चों को लेकर गई मैं शब पर खैर होती रही हूँ, वो तेरे बच्चों को लेकर गई मैं शब सारी मैं रोती रही हूँ, वो कभी गाजी का लहजा बदल कर मैं पैरे भी देती रही हूँ। इन बेवा बहू बेटियों से, इन बेवा बहू बेटियों से क्यों करते नहीं हो कलाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम। मैं देती कफन तुझको भैया अगर सर पे रिदा मेरे होती, मैं देती कफन तुझको भैया अगर सर पे रिदा मेरे होती, अगर होते खुले हाथ मेरे तेरे जख्मों को हाथों से धोती। पाबंदे रसन सर पर रहना, पाबंदे रसन सर पर रहना, देखो भैया चली हूँ मैं शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम शाम, आए शाम।
मकतल में जाएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी अभी मकतल में जाएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी सब पढ़ो लाशों से अलहिजाब की लाशों से अलहिजाब की आवाज आएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी जियो मातमी मौलाना लाशों से अलहिजाब की लाशों से अलहिजाब की आवाज आएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी कैदी है दफ्न बेटे को कैसे करेगी माँ कैसे करेगी माँ अकबर की कब्र दिल में ही अकबर की कब्र दिल में ही लैला बनाएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी जियो लाशों से अलहिजाब की लाशों से अलहिजाब की आवाज आएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी जियो यूं बाजुओं पे नील बनाए की रस्सियां बनाए की रस्सियां भाई तो क्या बहन भी भाई तो क्या बहन भी बहन से छुपाएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी कैदी है दफ्न बेटे को कैसे करेगी माँ कैसे करेगी माँ अकबर की कब्र दिल में ही अकबर की कब्र दिल में ही लैला बनाएगी ज़ैनब परे न सर अभी मकतल में जाएगी ये देना है अकबर गिरेंगे खाक पे
लाशों से अलहिजाब की, लाशों से अलहिजाब की आवाज आएगी। ज़ैनब करे नज़र अभी मकतल में जाएगी। फिर पढ़ो। अकबर गिरेंगे खाक पे नेज़ों से सारे सर, नेज़ों से सारे सर। ज़ैनब जो चलते नाके से, ज़ैनब जो चलते नाके से खुद को गिराएगी। ज़ैनब करे नज़र अभी मकतल में जाएगी। यूं बाजुओं पे नील बनाएगी रस्सियां, बनाएगी रस्सियां। भाई तो क्या बहन भी, भाई तो क्या बहन भी बहन से छुड़ाएगी। ज़ैनब करे नज़र अभी मकतल में जाएगी। मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन, मौला हुसैन या हुसैन। शबीर की वो लाडली, सीने पे जो शाह के पली, जिसकी अबारन में जली, मुंह पर तमाचों के निशान। मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक के इमाम हुसैन या हुसैन। वो आबिदे बीमार था, चलने से जो लाचार था, और शाम का बाजार था, बाजार था। थी मुस्तफा की बेटियां। मौला हक के इमाम हुसैन, मौला हक के इमाम हुसैन या हुसैन। वो असगरे बेशीर था, जियो मातमी मौलादा, और हुरमला का तीर था। प्यासा गला क्यों कर कटा, प्यासा गला क्यों कर कटा। लर्जी जमीन और आसमां। मौला हक के इमाम या हुसैन, मौला हक के इमाम या हुसैन या हुसैन। रो कर कहे कासिम की माँ, मारा गया कासिम जवान। ए लाल मैं ढूंढूं कहाँ, हाय हाय मेहंदी तेरी सहरा तेरा। मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन, मौला हक के इमाम या हसन या हुसैन या हुसैन। शाम-ए-गरीबा छा गई, आबिद को गैरत खा गई। पहरे पे ज़ैनब आ गई, अब्बास और अकबर कहाँ। मौला हक के इमाम या हुसैन, मौला हक के इमाम हुसैन या हुसैन। वो असगरे बेशीर था, अलविदा, और हुरमला का तीर था। प्यासा गला क्यों कर छिदा, प्यासा गला क्यों कर छिदा।
इमाम मौला हक इमाम या हुसैन 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत मुतवज्जे ज़ियारत अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसिय्यीन अस्सलामु अलैका या इब्न फ़ातिमतज़-ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन खुसूसन सय्यदी मौलाया अबुल फ़ज़्ल अब्बास व क़ासिम इब्न अल-हसन व मुस्लिम इब्न अक़ील व हानी इब्न उरवा व हबीब इब्न मज़ाहिर वल-हुर्र अश-शहीद ar-रियाही अस्सलामु अलैकुम या सादाती व मवाली जमीअ व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा अस्सलामु अलैका या मुईन अज़-ज़ुअफ़ा'i वल-फ़ुक़रा अस्सलामु अलैका या सुल्तान अल-अरब वल-अजम या अली इब्न मूसा ar-रज़ा रूह व जिस्मिकल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफ़तर रहमान अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान अज्जलल्लाहु तआला फ़रजक व सहलल्लाहु मख़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मोमिन इकराम ऐलान समाअत फरमा लें, कल इंशाअल्लाह इसी तरह इंग्लिश का प्रोग्राम ठीक 7 बजे, नियाज ठीक 7:30 बजे, ज़ियारत वारिसा और फिर इंग्लिश मजलिस और बाद सलातुल मग़रिबैन कल सोयम की मजलिस होगी। बरोज़ बुध वेडनेसडे को कोई प्रोग्राम नहीं है। फिर 4 रोज़ा थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे इसी इमाम बारगाह में रोज़ाना मजालिस का प्रोग्राम रहेगा, जिसमें मौलाना सैयद आदिल रज़ा साहब मजलिस पढ़ेंगे। आप तमाम मोमिन मोमिनात से दरख्वास्त है वक्त की पाबंदी के साथ शिरकत करें। और जैसा कि मैंने पहले अनाउंस किया, मेहरबानी करके पानी की बोतलें अगर आप लेते हैं तो पूरा पिए और ख़ाली बोतलें इमाम बारगाह में ना छोड़ें। रिसाइकलिंग बिन्स लगी हुई है, मेहरबानी करके उन खाली बोतलों को या बची हुई बोतली को भी जो है रिसाइकल बिन्स में डालें। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया।